very interesting and one of the best problem ever you can see for the small oscillation. And this problem was asked into JEST exam also. And I have also given you homework. So let's try to go for this one. This is wonderful. So there is a mass M and you have a spring attached to this mass M, and another particle of also has mass M, and one particle will move along x-axis and another will move along y-axis. So this will be y-axis and this will be x-axis. And there is one more spring is attached to this one. And the spring constant for this two is K and this one is K dash. So what we have to do? We have to find the angular frequency for the particular system, normal frequency. So obviously we have to write kinetic energy and we have to write potential energy. So it's a very, this is my origin. And it is also given that natural length of this spring is L. Natural length of this spring is L. And the natural length of this spring is root 2L. So you can have this Pythagoras law also. Okay. So let's try to go for this problem. In this problem, if you want to revise your small oscillation chapter, then this problem is the best one. So just try to do this problem with yourself, even if I am just going to solve it completely. So what we have to do, we have to first write the kinetic energy. So kinetic energy is very simple. For this one, I can write my kinetic energy is half m x dot square. For this second particle, I can write my kinetic energy is half m y dot square. So these two are the kinetic energy. And now we have to go for potential energy. So when we will go for potential energy, this is very simple. We can write half K x minus L whole square. This is stored potential into this spring, horizontal spring. And then we have to go for half K y minus L whole square plus, and this is for this one. Now we have to write the potential energy for this one. So what will be potential energy into this particular spring? If you can just extend it here, you can extend it into that direction, then obviously it will also extend it. So what will be that? Anybody can suggest me? Anyone? Try karo. Half K under root x square. चलो half, very good. K dash है ना? K dash है, K dash. Okay, good, very good. फिर आगे बताओ. Under root x square plus y square. Very good. X square plus y square minus under root 2L. Very good. Under root 2L whole square. Isn't it? Yes, sir. Very good. Very good. Good. Keep it up. So this is your potential energy. Okay. Now here is the catch. How you will proceed now? This is very interesting. अब यहां पर देखो, अगर आप टेलर एक्सपेंशन भी करोगे तो भी यहां पर आप बेसिकली हमें टेलर एक्सपेंशन ही करना है, लेकिन टेलर एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट करना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. And actually, if we are going to calculate the matrix of potential energy, don't worry about kinetic energy. It is very sweet, very simple. But potential energy is very interesting. So when you will go for the Taylor expansion, how you will find the all component? Obviously, these two are very simple. So there is not any problem. But you have to go for this one. And you can do the Taylor expansion also. Don't worry. And when you are going for the Taylor expansion, you have to go up to second order differentiable, because first order differentiation is going to 0 because it is equilibrium point. But the thing is that about which point you are going to do Taylor expansion. It is catch. Think and give me answer, please. How you will get the V matrix?
And here you can see this is in a functional form, so you cannot directly expand it, directly write it, and direct as we have done in earlier classes. So this is a little bit complicated. So you have to go for this particular, you have to write the V matrix in form of just first principle. Means we have to calculate V11, that is d square V upon dx square, about which point. This is very important. We have to identify the equilibrium point, and then we have to find the V1112. So first you will identify the equilibrium point, means you will go for del V upon del x is equal to 0, and then you will go for del square V upon del x square. Then that is the same thing you are doing, isn't it? Yes, sir. So किस पॉइंट के अबाउट है, दिखाई दे रहा है? प्लीज श्यान ध्यान से देखो. X equal to L and Y equal to. Exactly, very good. So what you have to do, you have to find the all matrix element as V11. Where you have to find, you have to just go for del square V upon del x square when x is equal to L and y is equal to L. Isn't it? क्योंकि यहां पर हम अगर x माइनस एल को x डैश पुट कर दे या eta1 पुट कर दे, इसको eta2 पुट कर दे, but this will create a complication. This will create a headache for us. So it will not match into that particular translation. Okay? जो ट्रांसलेशन हम करते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट के हर एक का 0 0 0 आ जाए, वो यहां नहीं हो पा रहा है. So you have to go for this. And now this is the first thing which is very conceptual. And now look at how you have to go for a calculation. Because if you will go for the complete calculation, then it will take a lot of time. So you have to do it very intelligently. So let's try to go for our next part. So next part, we are just going to write the potential energy matrix. So when we are going to potential energy matrix, and you will surprise that I will just do only one calculation and I will write all the matrix. Why? Because you can see, if I am going to change x to y and y to x, obviously it is a symmetric matrix. So I will use this particular concept of symmetric matrix and I can find all the component. Look at this particular calculation. And sometime it is very important that you need not to do complete calculation. You can easily neglect the unnecessary part. This is also very important if you want to do good in your examination. So before doing calculation, try to think that what you have to do step by step. Let's try to go for this one. So let's go for, first I am going to calculate del V upon del X. Because unless until we are not going to calculate del V upon del X, we will not go for the second order. Okay. So when we will go for del V upon del X, then this value is what? X minus L, and K time is also there. And this value is 0. So this value is K dash, and we have basically 2x upon root under x square plus y square minus root 2l. Sorry, कुछ गड़बड़ किया हूं मैं. So first we have to go for this one. पहले इसे पूरा डिफरेंशिएट करेंगे, then we will go for 2 and 2 will cancel. So we have x square plus y square minus root 2l. इसे डिफरेंशिएट कर दिया. Now we have to only differentiate this one because this is constant. Then we have multiply it and we have 2x and root under x square plus y square. Okay? ये कैलकुलेशन सही लग रहा है ना? आप एक बार साथ में मेरे रीचेक करो प्लीज. टेक योर टाइम, क्योंकि यहां अगर हम गलत करेंगे तो सारा गलत हो जाएगा, है ना? टू नीचे बताओ. ये तो 2 yes, भी कैंसिल हो जाएगा ना? ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. यस, दिस 2 विल ऑल्सो कैंसिल. या 2 रहेगा ये?
कैंसिल हो जाएगा सर। कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 विल ऑल्सो कैंसिल आउट, ओके, बिकॉज 2x एंड 1/2 रूट ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना, ये कैलकुलेशन सही है। नाउ अब ये ध्यान में रखना कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू एल और y इज इक्वल टू एल पुट करना है, ये आप ध्यान में रखोगे। सो व्हेन वी विल गो फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेट्स गो फॉर कैलकुलेटिंग v11, सो सॉरी वी सर, विल, हाँ बताओ। Q2 रहेगा वो पावर, सॉरी, ओके सर, ओके ओके देखो ओके। ये 2 को ये 2 खत्म कर दिया, ठीक है, यस, इस 2 को इसका वाला 2 खत्म कर देगा, है ना, ठीक है सर। ठीक है, वेरी गुड। हमेशा रीचेक जरूर करना चाहिए। नाउ डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हम कर रहे हैं, सिर्फ एक करना है, बाकी हम अपने आप लिख लेंगे, दिस विल बी के, सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। नाउ अब आप ध्यान से देखो, इस पूरे को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा ना, यस। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो एग्जैक्टली सेम थिंग आ जाएगा, ये भी फिर से फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देन व्हाट आई विल गेट k डैश अगेन x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर to the power half after differentiation, and again this term will be remain constant, so this will be x square plus y square will be there, okay। now क्या अब आप नेक्स्ट में बताओ, क्या मैं इसे डिफरेंशिएट करूं पूरा या फिर छोड़ दूं? ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, लुक एट दिस थिंग, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस √2l विल रिमेन कांस्टेंट, और इसके साथ साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक टर्म को जिसका कि ये डिफरेंशिएशन होगा, रिमेंबर दिस थिंग, है ना, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये करना होगा ना, इनटू दिस टर्म। नाउ अब बताओ मैं इसे डिफरेंशिएट करूं या ना करूं? जस्ट टेल मी, मैं इसे डिफरेंशिएट करूं या ना करूं, जस्ट टेल मी। बताइए भाई। देखो अब ये दिमाग में रखो कि आपको x की वैल्यू l पुट करनी है, y की वैल्यू l पुट करनी है, तो इस टर्म में ये टर्म जहां भी सर्वाइव करेगा, व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू l, दिस विल बिकम 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस टर्म का कोई रिलेवेंसी नहीं है, ये तो हमेशा ही कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? So there is no need to do this calculation because you have to find this thing at x is equal to L and y is equal to L. Now we will put all this thing. So what you will get? You will get V11 and that value is equal to K dash L into L. You have L square and here you have √2L into √2L square, √2L square. That value is equal to k plus k dash by 2. So your first term V11 is equal to k plus k dash by 2. Everyone is comfortable? अब अगर झूठ मूठ के आप फिर से इसे डिफरेंशिएट करो और ये टर्म आपके पास है ही और आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन नहीं है, तो अननेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा एंड इट विल बी अननेसरी लॉन्ग कैलकुलेशन, क्योंकि यहां फिर से दो फंक्शन है, इजंट इट? समझ में आ रहा है मैं जो बात कह रहा हूं? कुछ तो रिस्पॉन्ड करो यार। Yes, sir. यस सर। ओके, यस गुड। नाउ व्हाट विल बी V22? डायरेक्टली मैं V22 भी लिख सकता हूं। व्हाट विल बी V22? सेम होगा या डिफरेंट होगा?
Just tell me, Same it will होगा. same होगा. क्यों same Same. होगा? Because if you will change x to y, the potential is not going to change. So yes, V22 is also remains same. Now, the last but not the least, we have to go for what? V12, and you know that V12 and V21 is exactly same thing. तो ये तो हम रहने ही देते हैं. Only we will just going to change this one, and again we will just find what will be my V12. So what is your V12? Del square V, del x and del y. Isn't it? So next time हमें किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना होगा? Y के टर्म में. So this term is 0. प्लस अब बताओ फिर से y के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो किसको डिफरेंशिएट करने से काम चल जाएगा? दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन. क्या सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना जरूरी है? थ्योरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो सर्वाइव ही करेगा. सो दैट विल बी 0. So let's try to go for this. So again y के साथ डिफरेंशिएट करो. This term is 0. You have k dash, and you when you are going to differentiate this one, that means this will be y root under x square plus y square into x root under x square plus y square plus this term, then this term will remain same, minus root 2l into, you have to differentiate d upon dy now, x upon x square plus y square. So there is no need to do differentiation this one. Why? Because we have to go for x is equal to L and y is equal to L. And when you are going to do this thing, you will find k dash by 2. You will just put it and you will get this one. So V12 is equal to V21, and that value is k dash by 2. Look at, अगर आप intelligently इस problem को handle नहीं करते हो, then it will take at least half an hour in your exam and it's over. But if you will intelligently, just try to think before doing the problem. Try to think what will be next step, what will be next step, what we have to do. And now you can do it very easily. So yes, we have written potential energy matrix, and kinetic energy matrix is very simple, very nice. That will be basically your diagonal matrix, and then you can find the angular frequency. सर V12 और V21 सेम कैसे आया एक बार अरे बताओ? अरे भैया, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एनर्जी की. इतनी क्लास हो गई अभी तक आपने ये नहीं देखा? पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके सर. सिमेट्राइज नहीं करते थे. यस सर, यस 2x1 x2 को क्या करते थे? x2 x1 एंड x1 x2 करते थे. यस सर, 2, हाँ, रिमेंबर? यस सर, यस सर. तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो फिजिक्स का यूज कब करोगे? बार बार ये दिमाग में रखो, यू आर नॉट अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट. ट्राई टू फील द मैट्रिक्स. जब तक मैट्रिक्स की फीलिंग नहीं आएगी तब तक आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी. ओके, बिकॉज Yes. मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, है ना? तो आपका सिस्टम कैसे दिख रहा है मैथमेटिकली, वही तो आपको काम करना है. ओके, चलो. So now you can easily find this is my T matrix. T matrix is obviously M 0 0 M. And what is your V matrix? Your V matrix is K plus K dash by 2, and here is K dash by 2, K dash by 2, K plus K dash by 2. और प्लीज ये दिमाग में रखना, ये जरूरी नहीं है कि V11 और V22 हमेशा सेम हो. ये सिमेट्रिक के बारे में कुछ नहीं कहता, बट यहां हम लोग कैसे एक्सचेंज कर कर देख लिए कि x को y से एक्सचेंज कर दें, y को x से एक्सचेंज कर दें तो सेम रह रहा है. इजंट इट? यस सर. और ये हमने सिमेट्रिक, ये हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी से देखा है कि V12 एंड V21 विल ऑलवेज सेम बिकॉज इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, and then you can easily calculate V minus omega square T must be equal to 0, and I am writing this answer. Just you can check it with yourself. Root under K upon M, omega 1, and omega 2 is equal to root under K plus K dash upon M. I wish
everybody should do this question at least twice. At least 2 बार जरूर करना है इस क्वेश्चन को, ओके? बिकॉज इट्स अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा. कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ाना है ये समझ में आ जाएगा, एंड एवरीथिंग. ओके, गुड. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट वन. क्लियर है ना? आगे बढ़े. एंड दिस इज वेरी सिंपल मैट्रिक्स, तो आप इसको इजिली कर लोगे. लेट्स ट्राई टू गो फॉर अ नेक्स्ट वन. Next one is your double pendulum. Okay. So you remember, I think, double pendulum, and this one is more or less last problem. So this is free, and this is your mass M2. This is M1. This angle is theta. This is your X. Okay. So let's try to go for this problem. And we know the Lagrangian. What is my Lagrangian? याद है किसी को? Half m x dot square, sorry, m1 x dot square plus half m2 x dot square l square theta dot square plus 2 times x dot l theta cos theta. This is your kinetic energy. याद है ना? ये प्रॉब्लम हम लोगों ने कर रखा है. ओके. एंड व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? माइनस mgl cos theta. This is your potential energy. Minus m2gl cos theta. So now we have to just go for solving this particular problem for the small oscillation. This m2 will do the small oscillation. This is moving ahead, but it is also doing a small oscillation. The beautiful part of this problem is that only this particle is doing a small oscillation. This is just moving as a free particle, M1. So how we will go for this? Okay. So for the small oscillation, can I write my Lagrangian of a system? How you can approximate it? The Lagrangian of a system is what? Half m1 x1 dot square. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Half m2, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या? Not any problem. This is also good. So 2x dot l theta dot, what should be cos theta? Remember last class? 1. Double pendulum. So cos theta here I will take 1. Why? Because I just want q1 dot and q2 dot. That's it. I am just talking about my matrix element or matrix that is nothing but eta 1 dot and eta 2 dot. So I am just doing this thing. Otherwise, if you will go for the next level, then non-linearity will come into picture and a small oscillation or harmonicity will be gone. And Sir, it L square theta dot square, na, sir? sorry? L second term, sir. L square theta dot square. Okay, good. Thank you. And plus, what about this one? इसको क्या करेंगे? कहां तक लेके जाओगे? Shyan, just tell me. M2gl Up to second dot. 1 minus theta square by 2. Okay, so this is your thing. Now, what next? अब यहां अगर आप मैट्रिक्स मेथड में जाओगे, then it will be more complicated. Why? Because M1 तो just move कर रहा है in a free particle, as it is just moving as a free particle. Whatever with the thing is going to happen, whatever with the oscillatory motion is going to happen is for the M2. So here we have to go for the first principle method. So let's try to go for first principle method. What is first principle method? We will just write the equation of motion after reducing the my Lagrangian in a small oscillation, and we can easily go for this. Okay, because oscillation is only into theta with associated to the theta generalized coordinate.
So let's try to go for this. So first thing you can see, just we will go for, so we have to write the equation of motion for the theta. So what will be this? D upon dt del L upon del theta dot minus del L upon del theta must be equal to 0. And when you are going to write this one, then what you will have? You have m2 L square theta double dot plus m2 L x डबल डॉट, है ना? एक बार थीटा डबल डॉट के साथ करेंगे तो ये रहेगा, टाइम के साथ आएगा तो ये आपका x डबल डॉट भी आ जाएगा. ओके, एंड दिस इज योर दिस टर्म माइनस माइनस प्लस m2 gl theta must be equal to 0. Now the problem arises here, isn't it? कहां प्रॉब्लम आ रहा है? क्या इसको 0 कर दूं x डबल डॉट को? What about this? इसको सॉल्व कैसे करोगे? थीटा डबल डॉट एंड x डबल डॉट इज देयर. So let's try to go for this one. So obviously we know that x is cyclic coordinate. So we have del L upon del x dot is some constant. And when we have this particular thing, then we have m1 x dot plus m2 x dot plus m2 L. This is theta dot, okay? Not theta, this is theta dot. So m2 L theta dot must be equal to some constant. And here you can see there is relationship between theta dot and x dot. So what is the relationship here? So theta dot is basic, or x dot is nothing but minus m2 L theta dot by m1 plus m2. So if you will do x double dot is equal to 0, that means your theta double dot is also 0. Then everything is 0, isn't it? Are you getting my point? So you cannot put x double dot is 0. So here you can write your x double dot, because here this x dot is function of theta dot. This is very interesting when you are reducing into this manner. So here I can write x double dot is equal to minus m2 L theta double dot by m1 plus m2. And now we will put it here. So this is m2 L square theta double dot plus m2 L minus m2 L theta double dot by m1 plus m2 plus m2 gl theta is equal to 0. And you can easily reduce this particular. Now you have theta double dot and you have theta, so there is a fair chance that you can solve this particular equation. Okay, so you can easily do all calculation, है ना? हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिखूं या फिर इसे कर दूं? बताइए. Only algebra is there. चलो कर लेते हैं. So we have m2 L square theta double dot, and you can just multiply with m1 plus m2 theta double dot minus
m2 square L square theta double dot by m1 plus m2 plus m2 GL theta must be equal to 0. यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है. m2 square theta double dot is cancel out. So what is going to survive? m1 theta double dot by m1 plus m2. It's okay. यही सर्वाइव कर रहा है ना. Sorry, m1 into m2. This term will be survive plus m2 GL theta must be equal to 0. You can take m2 common and then you can have a final equation that theta double dot plus and L will be also there. L square bhi hoga na. So there is L square is also there. So L square is also there. So plus you have G upon L m1 plus m2 by m theta must be equal to 0. So what is your angular frequency? What is your angular frequency by m1? बताओ. So omega is equal to root under G upon L m1 plus m2 by m1. This is your answer. And now you can recheck whether it is correct or false. So कैसे recheck करोगे? श्यान बताओ कैसे recheck करेंगे, सही है या गलत है? If you just put m1 equal to m2, then No, m1 is equal to m2 put करने से कैसे recheck कर लोगे? Just recheck. m1 को infinite कर देंगे. Very good. m1 को infinite करोगे तो simple pendulum में convert हो जाएगा, isn't it? yes sir. और देखो m1 को infinite करो, what you will get? G upon L 1 plus m2 by m1. When m1 tends to infinite, that means that point of position is fixed. Then omega is equal to, so I am writing here, omega is equal to what? Root under G upon L, isn't it? That is the angular frequency for simple pendulum, isn't it? तो कई बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप चारों ऑप्शन देख करके थोड़ा बहुत पहले भी अंदाज लगा सकते हो कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. एंड यू हैव टू remember that what is the final solution of simple pendulum, what is the final solution of harmonic oscillator and all this thing. Okay, and this is one of the very fundamental problem where you can use your first principle, write the equation of motion, and you can just prove here this acceleration is proportional to minus theta, and you can find the angular frequency. So this is again one of the my favorite question. ठीक है, एग्जाम में अभी तक इतना दूर गए नहीं है, बट जाना चाहिए और हमें भी उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. ओके, एग्रीड? सर ये जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे आए लैग्रेंजियन से, सर ये कैसे आइडिया लगेगा, मतलब अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आता है? देखो, अब देखो ये बहुत अच्छा बात है, इस पर हम कैसे बात करें. देखो, अब हम लोगों ने कितने तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया. हम लोगों ने एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी भी x डॉट स्क्वायर के टर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी भी x डॉट स्क्वायर के टर्म में है ना, सॉरी x स्क्वायर या y स्क्वायर के टर्म में. रिमेंबर, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बाकी सब, तो उसमें तो आप डायरेक्ट वही यूज करोगे. दूसरी तरह के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया जहां पर टेलर एक्सपेंशन को करने के बाद आपके पास इजिली वो रिड्यूस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ईटा 1 डॉट स्क्वायर ईटा 2 डॉट स्क्वायर के टर्म एंड पोटेंशियल एनर्जी ईटा 1 स्क्वायर एंड ईटा 2 स्क्वायर, जैसे डबल पेंडुलम. क्लियर है ये? या फिर वो प्रॉब्लम किया था जिसमें आपने दो पेंडुलम था, दोनों के बीच में स्प्रिंग लगा था, लास्ट क्लास, रिमेंबर. तीसरी तरह की प्रॉब्लम आज मैंने किया
जहां पर एक्सपैंड करने के लिए तो आपको सारा ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी, इजंट इट? और ये चौथी तरह की प्रॉब्लम है जहां पर आप देख रहे हो कि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है जहां पर ऑसिलेशन हो रहा है, दूसरे में कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, तो वहां तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही जाना होगा ना। मैट्रिक्स का यूज कहां करते हैं? जहां एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है। यस? यहां पर ये बताओ इस चीज को, जहां ये तो मैंने मिटा दिया, जब मैंने लैग्रेंजियन रिड्यूस करने के बाद लिखा था तो मैं बार बार क्या कह रहा था कि भाई स्मॉल ऑसिलेशन तो यहां मुझे एक ही जगह होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो थीटा के जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म तो मिला ही नहीं मुझे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स डॉट स्क्वायर तो मिला, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं मिला ना पोटेंशियल एनर्जी में। तो वहां पर जहां पर एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वहां मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करके तो और आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दोगे। सो व्हाई वी हैव टू गो फॉर द फाइनल रिसोर्ट, तो यही है, दिस इज द फाइनल थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एक बार सारे क्वेश्चन को फिर से रीएनालाइज करो, मैं आपको फिर से बात करूंगा आपके लिए, ठीक है? ओके। यस सर। सो मेनली आपको चार तरह से चीजों को सोचना है, ठीक है? एक तो बेसिक, जो जिसमें डायरेक्ट स्प्रिंग लगा हुआ है, सारा इजिली रिड्यूस हो जाता है। दूसरे में आपको टेलर एक्सपेंशन के रिड्यूस करने के बाद इजिली आपको मिल जा रहा है स्क्वायर का टर्म दोनों जगह, ये भी हो गया, डबल पेंडुलम जैसे प्रॉब्लम है। तीसरा, जिसमें टेलर एक्सपेंशन को रिड्यूस करने के लिए आपको सारा ही कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, जो लास्ट प्रॉब्लम हमने किया। और चौथा, जहां पर सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऑसिलेशन हो रहा है, तो उसको तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व करोगे ना, ठीक है? और ये भी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व हो जाएगा, बट इट विल अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड। एक बार ट्राई करना, लेकिन वहां मैट्रिक्स मेथड में कोई मतलब नहीं है वहां पर, है ना? चलो, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर, मेरी क्लास कितने बजे तक है आज? सॉरी, 6:25. 6:25, सो इट्स ओवर, है ना? चलिए, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव बिकॉज अदर टॉपिक अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो इसको लगभग फिनिश कर चुके हैं, है ना? सो टुमारो आई विल गो फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्शन एंगल का यूज करके टाइम पीरियड निकालेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर नेट एग्जामिनेशन। ओके, सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट आपको वो आइडिया होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो टुमारो वी विल गो फॉर बेसिकली एक्शन एंगल प्रिंसिपल को यूज करेंगे, है ना? ओके, थैंक यू।